हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है हीरो मोटोकॉर्प की नई मैवरिक 440 एंड वी आर एट रन ऑफ कच्छ। इस मोटरसाइकिल की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम रुपीज 1.99 लाख फॉर द बेस वेरिएंट। अगर आप मिड वेरिएंट खरीद लोगे दैट इज प्राइस्ड एट 2.14 लाख एंड द टॉप ट्रिम इज अवेलेबल एट 2.24 लाख एक्स शोरूम। बेस वेरिएंट के साथ आपको स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं, सो no tubeless tire functionality, and then the other two variants have some differentiation and the top variant has connected features because इसके साथ आपको एक SIM card enabled speedometer cluster मिल जाता है। Now powering this motorcycle is a 440cc air oil cooled single cylinder motor which produces 27 bhp of power and 36 newton meters of peak torque। इस इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया जाएगा अलोंग विद अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। ये 440cc लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो है इसका कोर फोकस है टॉर्क डिलीवरी। 90% पीक टॉर्क आपको मिल जाएगा एट लेस देन 2000 आरपीएम, जिसकी वजह से राइडेबिलिटी जो है वो काफी बेहतर होने वाली है। और आपको सिर्फ एक ऑयल कूलर मिलता है, दिस इज नॉट अ लिक्विड कूल्ड इंजन। सो सबसे पहले तो आई रियली वांट यू टू अप्रिशिएट दिस लैंडस्केप। Just have a look at this. This is the route between Dholavira and Run of Kutch. We are staying at the tent city at Run of Kutch and we were out riding and reviewing this Maverick 440 at this location. Totally mesmerized, and अगर आपको घूमना पसंद है, if you like to be on the road, if you like to drive or if you like to ride, whatever is the case, just come here and I'm sure you will be surprised of how beautiful this looks. And let me tell you, it is sunny right now, but it is pleasant. It is not something that is going to make you drip with sweat. Now चलिए शुरू करते हैं Maverick 440 की राइड रिव्यू। एंड सबसे पहले let me talk about the NVH characteristic of this motorcycle. इस बाइक के साथ आपको एक 440cc सिंगल सिलेंडर इंजन मिलती है एंड ओवरऑल द रिफाइनमेंट इज क्वाइट डिसेंट। इस मोटरसाइकिल का नेचर ऐसा है दैट यू डोंट हैव टू रेव इट हार्ड टू मच। आपको ज़्यादा हायर रेव स्पेस बाइक को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज द ब्रांड क्लेम्स दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीक टॉर्क इज अवेलेबल फ्रॉम as low as 2000 rpm or something like that. So the motor is very torquey, it is very tractable, and because of that, since you are not at higher revs, आपको ज़्यादा vibrations, pulsation की दिक्कत फील नहीं होगी. You will not complain about that. But there are vibrations. अगर आप इस बाइक को हाईवे पे चलाने वाले हो at an rpm of above 5000 and onwards, आपको वाइब्रेशन जो है वो फील ज़रूर होता है। इस बाइक को चलाते समय यू विल फील दैट वाइब्रेशन ऑन द पेग्स, अ लिटिल बिट ऑन द सीट एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑन द हैंडल बार। सो देर आर वाइब्रेशंस बट यू नो यू एनकाउंटर दैट आरपीएम ओनली व्हेन यू आर पुशिंग द मोटरसाइकिल। जब आप कैजुअली इस बाइक को चलाने वाले हो, आई डोंट थिंक यू आर एवर गोइंग टू क्रॉस दैट 5000 आरपीएम मार्क बिकॉज you just do not need to do that. The motor has so much torque, it is so happy even in higher gears at lower revs that you can just keep chugging along and you need not rev the engine to its maximum. So भले ही vibrations की issue थोड़ी बहुत है, you will feel it, but it is not something that will make or break the deal for most of the buyers. And in a casual commuting use case, you will not feel this to be problematic at all. Overall, I think the NVH package is quite decent, and since we are talking about NVH, let me pull over to the shoulder. The mic is inside my helmet. सुन लीजिए इस मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट. ओके, सो दिस इज हाउ इट साउंड्स. So not bad at all and it is quite pleasant. जब आप इस बाइक को चलते हुए देख लोगे, like if someone is riding this bike around you, you will
like the sound of that exhaust. It is quite nice and pleasant. ज़्यादा loud नहीं है, ज़्यादा thrashy भी sound नहीं करता है. It is actually quite nice. You get a full system exhaust like a proper end can, not a short exhaust end can or an ugly looking really massive end unit. So whatever Hero MotoCorp has managed for this Maverick 440, it does sound good. Just have a look at this landscape. Oh my god, how beautiful is this? And I hope that this has not biased my opinion about this motorcycle. I'm sure it cannot, but the riding experience has been very pleasant because of this location. It has been magical. We don't really ride and review and shoot at this hour of the day. It is past 2 p.m. right now. We usually shoot at sunrise and we are done by almost 10 or 11 a.m. This is very unusual and I am pleasantly surprised. अभी बात करते हैं हीट मैनेजमेंट के बारे में. हमने इस बाइक को 200 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया है एंड द ओवरऑल हीट मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रीटी गुड. अभी इट इज़ नॉट रियली अ वेरी हॉट सनी समर डे, लेकिन फिर भी जब हम एक जगह पे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, व्हेन वी वर आइडलिंग द मोटर एंड व्हेन वी वर आल्सो स्टक समवेयर एट द run of Kutch location where we saw the white sand and we were in that salt pan kind of an area. हम एक जगह पे फंसे भी थे, but even when we were struggling to get the bike out, it did not overheat. And once we were on the bike again, our feet did not feel too much of a problem. So I had no problems. Even my photographer who was around the motorcycle, he did not mention anything about the heat. So I think this bike during your commutes, it will keep you happy. On a really summer day, on a really hot summer day, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत देर तक इस बाइक को चला दोगे, थोड़ी बहुत गर्मी तो आपको ज़रूर आपके पैरों के आसपास फील होगी. That is natural, so that is something that you will have to live with. But it is not at all KTM levels of hot or something like that. It is not as hot as the Royal Enfield motorcycles either. So I think Hero MotoCorp has done a fantastic job in terms of heat management as well. अभी अगला पॉइंट है ईज ऑफ यूज का. इस मोटरसाइकिल का जो कर्ब वेट है दैट इज 187 kg. 17 इंच के व्हील्स का ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल करती है एट द फ्रंट एंड एट द बैक. ग्राउंड क्लियरेंस नंबर है 175 मिलीमीटर्स एंड ओवरऑल राइडर्स ट्रायंगल जो है वो काफ़ी न्यूट्रल है. हैंडल बार वाइड है. यू हैव अ नाइस चेस्ट ओपन काइंड ऑफ अ पोजीशन, चेस्ट आउट काइंड ऑफ अ राइडिंग पोजीशन. फुट पे पोजीशनिंग जो है वो ज़्यादा रियर सेट नहीं है. इट इज़ नॉट कंप्लीटली सेंटर सेट. हल्के से फुट पेक्स पीछे की तरफ है बट दे आर नॉट एट ऑल स्पोर्टी. दिस इज नॉट गोइंग टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल एट ऑल. और ये जो हैंडल बार है इसको ग्रैब करने के लिए आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है. यू डोंट हैव टू रीच आउट एंड स्ट्रेच आउट टू गेट these handlebars in your wrist. So overall rider's triangle काफी comfortable है. I have had no problems riding this bike in unknown territory over here in and around Run of Kutch and I was not tired yesterday. I am not tired today. कल भी मैंने 100 किलोमीटर से ज़्यादा ये बाइक चलाई थी. I felt no problem, no fatigue and even the engine showed no signs of fatigue. ये जो मोटरसाइकिल है, चेक दिस आउट, टू स्विंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू डोंट फील दैट वेट. कर्ब वेट जो है इट टेल्स यू दैट इट इज नॉट द लाइटेस्ट मोटरसाइकिल इन दिस 400cc क्लास ऑफ बाइक्स बट वंस यू आर ऑन द मूव दिस वेट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू स्केयर यू. ये मोटरसाइकिल बिल्कुल ही इंटिमिडेटिंग नहीं है. इसे मैनेज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. यू विल बी वेरी हैप्पी ऑन द सैडल. अगर ये बाइक आप शेयर करने वाले हो with your parents, your siblings or just any of your friends, nobody will complain that this is a heavy motorcycle. पार्किंग सिचुएशन में भी इस बाइक का वेट मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. हाँ, अगर आप ऑफ रोडिंग करने निकल जाते हो और कहीं स्लश में फंस जाते हो, then to get this bike out you will feel that weight because if you are stuck in such a situation you also are not going to get a strong footing to push the bike out. So be careful
when you ride in such tricky terrain. But overall, good, comfortable rider's triangle, very confident rider's triangle, and the rider's point of view is also quite nice. जब आप इस बाइक को देख लोगे पीछे से ये मोटरसाइकिल आपको शायद थोड़ी छोटी फील होगी, but when you are on the saddle, when you are on the rider seat, this profile, it looks quite nice and it looks quite large. तो आप एक substantial बाइक चला रहे हो ऐसी फीलिंग आपको आ जाएगी. When truckers don't give you way, और इस तरह से अगर आपको खराब रास्तों पे से इस बाइक को चलाना होगा on the dusty patch of the road, no problems at all. And अभी भी मुझे झटके फील नहीं हो रहे हैं. I am very comfortable and confident as a rider on this Maverick 440. So, this is a very well-rounded product. Let me tell you, this is going to be an underdog in the segment. Royal Enfield के motorcycles को बहुत प्यार मिलता है. They get a lot of hype, whatever product is launched or in whatever colors. The Triumph motorcycles, they made a lot of noise. Then you have the KTM range also in that 400cc class of bike category now. You have the Harley Davidson X440, which got a huge hype because of that Harley Davidson brand name, even though that bike just looks completely trash. But this is a very interesting product. और ये बाइक जो है, it has very strong potential to sell in very good numbers, because Hero MotoCorp के पास इतने ज़्यादा showrooms हैं. Their network is so deep down within India. At grassroots level, they can just showcase this motorcycle to the masses and sell it in huge numbers. And overall, let me just tell you that this is a very, very good bike to ride, and I think it even looks good. आज मेरे साथ इस मोटरसाइकिल का obviously top model है. That is what is the theme at usual media drives and rides. You get the top of the line variant, and I have the glossy finish for the fuel tank in this shade of black, along with a dual tone seat. Check out कीजिए जो अलग वीडियो हमने अपलोड किया है about the design, the comfort and the features, so you get to know everything about this Maverick 440. Now let me talk about the speedometer cluster. As you can notice, overall unit काफी बड़ा है, लेकिन जो display area है वो काफी narrow है, and I don't know why that has been done. They could have just used the entire real estate over here which is available. They could have just spaced out the information in bigger fonts. I am okay reading the speed, I am okay reading the gear position indicator, I am okay with the clock, I am even okay with the trip computer and that real-time fuel efficiency number. But that tachometer, that RPM meter, it is just pointless, it is rubbish, you just cannot see it. And I wish an RPM gauge was well executed over here on this speedometer cluster. इस बाइक के साथ बाय द वे टॉप ट्रिम्स के साथ आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलने वाले हैं, एंड द स्पीडोमीटर क्लस्टर देन इज गोइंग टू बी सिम एनेबल्ड ऑफ कोर्स. आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी. यू विल गेट कॉल एंड SMS अलर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट टू. एंड इफ यू आर इन एन इमरजेंसी, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी स्टाइल आपको एक फ्लिप स्विच मिलता है, एंड दिस इज द SOS बटन अंडरनीथ. सो अ वेरी नाइस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इमरजेंसी बटन if and when you need some assistance or help. Overall, ये जो speedometer cluster है, negative backlit है. The information even under top sun, it is easy to consume, but it could have been better. It could have definitely been larger. It is too small over here. ये actually मुझे लगता है ये mirror से भी छोटा speedometer cluster है. I mean, I don't know. They wanted to keep it minimalistic maybe, but it is what it is. Now moving on, ये जो rear view mirrors हैं इस बाइक के, round shaped, nice and large. They are not too small, so you get a good view of what you are leaving behind you, and they're very easy to adjust as well. So that's also good in terms of ergonomics. And going on about ergonomics, switch gear जो है self explanatory. Plastic quality is great, and all the buttons are very easy to access and operate, so no complaints over there either. इस बाइक के साथ by the way आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, which is over here, and you can very easily charge your smartphone
एंड चेक दिस आउट, इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हो. तो अगर आपने आपका फ़ोन यहाँ पे माउंट किया हुआ है, द केबल नीड नॉट बी टू लॉन्ग एंड डैंगलिंग अराउंड. सो this is also a nice place to have your USB charger, not here under the switch cube or on the speedometer cluster. So good job Hero MotoCorp, you have thought about everything to be ergonomic on this motorcycle. Ergonomics के बारे में जब बात कर ही रही हैं, यहाँ पे टैंक पे आपको नी रिसेसेस भी मिलते हैं. So you know you can grab on to the fuel tank जब आप इस बाइक को तेज चलाते हो through corners. So you know you can feel connected, you can feel one with the motorcycle and get more confidence. And even if you are a taller rider, I think there is reasonable room even on the seat to move around, to slide around. तो ये motorcycle accommodating भी है. Yes, it might not look too large, but it is surprisingly spacious and I am quite pleased with this Maverick 440. अभी चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में. 440 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड मोटर, 27 bhp of power, 36 newton meters of torque, and the core highlight of this engine is that the focus is on torque, on tractability and not on the top end rush. So let me demonstrate the torque delivery and just how tractable this motor is. So what I will do is I will pull over to the shoulder now and check this out. Coming to a standstill and I'm in second gear. Here is your proof. Second gear, not in first. Simply slipping the clutch. No throttle input. Check this out. No throttle input. No hesitation, no jerks. ये मोटरसाइकिल काफ़ी आसानी से पेस पिकअप कर रही है. It is picking up momentum and I have completely left the clutch as well. So as you might have noticed, बिल्कुल भी झटके फील नहीं हुए and बिल्कुल भी कोई jerk इस engine ने फील नहीं करवाया. In first gear obviously it is going to be better, but again let me just show that to you in second gear. See, right now it is in neutral, moving up to second, slipping the clutch. Check this out, picking up pace, no throttle input, not even on proper paved surface. डस्टी पैच पे हम हैं, गेटिंग ऑन द टारमैक, नो प्रॉब्लम्स. हल्का सा इंक्लाइन भी है, नो हेजिटेशन एंड एज सून एज आई गेट ऑन द गैस वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू रोल. सो टॉर्क अवेलेबिलिटी जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है. चेक दिस आउट, आई एम मूविंग टू 6th gear right now and when I'm in 6th gear the speed is at 50 kilometers per hour. अभी थोड़ी नॉकिंग ज़रूर है, बट वंस यूर एट 60, 6th गियर में 60 किलोमीटर पर आवर तक आप स्पीड को ड्रॉप करने दे सकते हो. इवन आई गेस 55 शुड बी कंफर्टेबल. चेक दिस आउट इन 6th गियर, नो नॉकिंग, नो हेजिटेशन एंड एज सून एज आई गेट ऑन द गैस, good to go, good roll on acceleration even in a higher gear at lower speed, at lower revs. But if you want to gauge the performance, if you want to check out the 0 to 100 performance, let me show that to you. So I'm in first gear. इस बाइक के साथ आपको कोई राइड मोड्स नहीं मिलते हैं. स्टैंडर्ड राइडिंग मोड, ड्यूअल चैनल ABS is active and in 3, 2, 1 4th gear you will easily cross 100 kilometers per hour. 3rd gear में ही आप almost 100 kilometers per hour cross कर सकते हो. And check this out, really strong acceleration, isn't it? Let me demonstrate this to you one more time. One more time, coming to a standstill, slotting the motorcycle in first gear, and now we will sprint to 100 kilometers per hour and above. And we will also check if in 3rd gear we can touch 100 kilometers per hour. So now in 3, 2, 1. Check out the acceleration. But again, I have upshifted before I touched 100. I could just sense that the power was tapering off, but let me just push it. Let me just push it.
Let us check if it can touch 100. This time I will not upshift once I am in third. So in 3, 2, 1. Not going to upshift. It does hit 100, but it also hits the rev limiter. So, I had a good sense that there was no potential, bandwidth left for the motor to rev higher. So that is why I was upshifting previously. But you might have understood the acceleration. It is reasonably fast, and it is going to keep you entertained on your weekend rides, and it will also keep you happy at commuting speeds. Check this out. Gentle with the throttle. गांव के रास्ते में हम इस बाइक को अभी चला रहे हैं. ज़्यादा लाउड ये बाइक नहीं है, ज़्यादा किसी का अटेंशन ग्रैब नहीं कर रही है. जस्ट शॉर्ट शिफ्टिंग, अप शिफ्टिंग अर्ली in the rev range, and I'm just moving ahead with minimum effort and no hesitation from this motorcycle. I really like such effortless motorcycles because on a day-to-day basis आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बाइक चलाने के लिए. The engine has enough torque. You just keep chugging along, and what a nice experience, what a good experience. Now you know everything about the performance. It will ride higher up in triple digits easily, and overall अगर cruising speed की बात करें तो 100 to 110 km/h should be an effortless number. Right now, if I'm in 6th gear, 80 km/h is way below 4000 RPM. If I'm going to pick up pace, let us check it out. If I try to hit 100 km/h, at 100, the RPM on this motorcycle, it is still well below 4000 RPM. So the engine is not at all stressed right now. I think it is at 4000 RPM when it is at 100 km/h. So very nice relaxed state of tune, and at this speed आपको vibration feel नहीं होता है because like I mentioned, the vibrations start to creep in over 5000 RPM. So 100 km/h for your long distance touring and cruising, no problems. I think you will be good to go. But if you want to ride hard and if you want to ride fast, check this out. Check out the roll-on acceleration. Over 100 km/h right now, and at close to 120 km/h हल्का सा बज़ फुटपेक्स पे शुरू हो जाता है, but it was not something that was going to make me uncomfortable because at triple digit speeds, at higher triple digit speeds, your main focus would be on the road and not on these finer details. So I think the performance is good. It is not great, it is not exceptional, it is not explosive, but it is satisfactory for sure, and it will complement your riding style. अगर आप आसानी से easy commuting करते हो, easy riding करते हो, अगर आप ऑफिस commutes के लिए एक प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो, you don't want fancy bells and whistles, I'm telling you, this is a very very good product from Hero MotoCorp, and it just has very good potential. गियरबॉक्स की अगर बात करें तो गियर शिफ्ट जो है वो प्रिसाइज है. कोई भी फॉल्स शिफ्ट हमने नोटिस नहीं की. जब मैं फंसा हुआ था एट रन ऑफ कच्छ, तभी भी when we were just spinning our rear wheel, even then when we were shifting gears between first and second, I could just very easily feel that gear shift. It can be a little bit more smoother, the lever feel, but gear shifts precise ज़रूर है, उसमें आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगे. लीवर फील की अगर बात करें तो इस मोटरसाइकिल के साथ आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, एंड द लीवर कुड हैव फेल्ट अ लिटिल लाइटर. KTM बाइक से मैं अभी कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज आई ओन अ KTM 390 एडवेंचर. सो विथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच फंक्शन
दिस इज स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपकी उंगलियां दुखेंगी नहीं, दर्द नहीं करेंगी, but I have used a lighter clutch operation for sure, so that is just my honest opinion. Now talking about the seat, it is well padded, it is nice and supportive, and it is nicely scooped. You sit in the motorcycle, as you can notice right now, and you know the seat will keep you in your position, it will lock you in your position. और ज़्यादा हिलते नहीं रहोगे even under hard acceleration. So the seat, the cushioning, the feel on your bottom, no problems. and अगर आप चाहो तो एक थिकर सीट कवर लगा के एक्स्ट्रा कुशनिंग मैनेज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट द सीट इज गुड इनफ, इट इज गुड फॉर योर लॉन्ग राइड्स टू. अभी बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में. इस बाइक के साथ आपको एक 43 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क दिया गया है, नॉट अपसाइड डाउन. पीछे आपको 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, नॉट अ मोनोशॉक. सस्पेंशन सेटअप जो है, इट हैज बीन ट्यून्ड मोर टुवर्ड्स द कंफर्ट साइड. अभी जब हम इस बाइक को चला रहे हैं अराउंड कच्छ इन गुजरात, रास्ते ओवरऑल तो काफी अच्छे हैं, बट इवन ओवर uneven surfaces or on broken patches, the suspension setup soaks it up quite nicely. Check this out right now. एक हल्का सा खराब पैच आ जाएगा and of course you will move around, but it is manageable. It is not going to bottom out the suspension. एक भी बार suspension bottom out नहीं हुआ है. We were riding the bike hard and fast as well, so the tuning is quite good. and जब आप इस बाइक को तेज चलाने वाले हो तभी भी the suspension stays planted. It doesn't feel too value. So ऐसा नहीं है that the suspension is too soft and it will bottom out or it will keep you unstable जब आप high speed से इस बाइक को चलाने वाले हो. Overall comfort genuinely काफ़ी अच्छा है and the suspension setup, I can't really complain about it for the pillion. It all depends on pillion preference as well. उन्हें पहले तो pillion बैठना पसंद है या नहीं, उन्हें लॉन्ग राइड्स पे जाना पसंद है या नहीं, and if at all they are willing to go out with you or not. So pillion comfort is very subjective, but suspension for me, suspension for the rider, really good, really impressive and no complaints. Even under hard braking, check this out. अगर मैं फ्रंट ब्रेक को ग्रैब करता हूँ completely, ज़्यादा स्कैरी नोज डाइव नहीं है. and check this out one more time. The suspension, it that also gives you confidence. Of course it is more to do with the brakes and the tires, but even the suspension tune is good. अभी चलिए बात करते हैं टायर्स के बारे में. MRF के टायर्स आपको दिए गए हैं. MRF has been doing a fine job in the Indian market, especially in the mass market segment, and even on this Maverick 440 जो टायर्स मिल रहे हैं, they offer you very good grip. कॉर्नर्स पे जब आप हाई स्पीड्स पे इस बाइक को चला लोगे, ख़राब रास्तों पे से जब आप इस बाइक को चला लोगे, ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं. एंड you know that the MRF compounds even last long, so आपको बहुत जल्द आपके ओनरशिप साइकिल में टायर चेंजेस के खर्चे को पालना नहीं पड़ेगा. सो दैट शुड गिव यू सम पीस ऑफ माइंड. ओवरऑल टायर्स अंडर ब्रेकिंग ऑल्सो गिव यू गुड कॉन्फिडेंस. दे सपोर्ट योर ब्रेकिंग हार्डवेयर वेल एंड दैट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस ऑन योर हाईवे टूर्स, ऑन योर वीकेंड राइड्स. सो द टायर्स आर गुड टू. अगला पॉइंट है ब्रेकिंग के बारे में. नाउ you get dual channel ABS, disc brake at the front, disc brake at the back, and overall the braking hardware is just about decent. It could have been better, it could have been sharper. Hero MotoCorp का कहना है that they have tuned the braking hardware such so that even new riders, new to the segment, new to the premium motorcycle segment can ride this bike confidently without feeling too scared. So अगर ये आपकी पहली बाइक है with a disc brake, this will not intimidate you, this will not trouble you. लेकिन जो लीवर फील है और जो इनिशियल ग्रैब बाइट है, that could have been sharper for my kind of riding style and for my preference. Rear brake जो है,
it just kicks in the ABS very soon. तो अगर आप बहुत ही शार्प इनपुट देते हो ऑन योर रियर ब्रेक लीवर, you know, you will feel that ABS pulsation, and then your stopping distance is going to be compromised a little, but it is what it is. Front brake पे ABS इतना जल्दी kick in नहीं करता है, so that will not, you know, scare you, that will not, you know, take away any confidence from your riding. If you have to really stomp on the brakes in an emergency situation, check this out, the road surface is a little dusty right now, and if I grab onto the brakes, it stops in a nice straight line, and no screeching, squealing from the tires, and you know, no losing balance. So overall weight distribution भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है. I don't really know the weight distribution split, but in terms of handling and in terms of, you know, braking in an emergency, this Maverick 440, it is doing a good job. Now let's talk about the handling characteristic. ये मोटरसाइकिल जो है, it is a roadster motorcycle, but it has that, you know, modern classic kind of a design language. A lot of round shapes here on the mirror, on this speedometer cluster too. You have a circular shaped headlamp, you have circular turn indicators, all LED lighting by the way. So you know that circular shape hints at a modern classic kind of a motorcycle, but it does have a lot of roadster styling, like this really large looking fuel tank, really large tank extensions, and overall राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है. लेकिन राइडर्स ट्रायंगल ऐसा है दैट इट इज़ रिलैक्स्ड. दिस मोटरसाइकिल इज नॉट कीपिंग यू कमिटेड एंड एंगेज्ड एंड यू नो जस्ट हिंटिंग दैट राइड मी फास्ट. ऐसी ये मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है. इट इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल that reflects in the rider's triangle, that reflects in the nature of the motor, and that reflects in the way it moves as well. It is not a really sharp cornering tool, it is not a corner carver, but it will swing from left to right effortlessly. वेट जो है उसकी वजह से भी आपको आपकी स्पीड जो है उसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. द मोटरसाइकिल इज़ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल, and because of that, this handling characteristic of this Maverick 440, because it is so neutral, it will keep most of the customers and potential customers, you know, pleased and happy and satisfied. Of course, अगर आप ज़्यादा हार्ड ज़्यादा फास्ट इस बाइक को वाइंडिंग रोड पे चला लोगे तभी ये राइडर ट्रायंगल आपको शायद थोड़ा एंगेजिंग कम लगेगा. But then you know which motorcycle you have purchased, you know what format of a bike this is, so you can't really expect something out of the blue. So guys, overall मेरा राइड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है विद दिस Maverick 440. इट इज़ अ वेरी 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 गुड मोटरसाइकिल आई थिंक, एंड हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली हैज़ अ विनर. देयर इज़ वन ह्यूज मिस. इस बाइक के साथ आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नहीं मिलती है. डिस्प्ले पे आपको रेंज दिखाई देती है. यू गेट एन ओडोमीटर, you get 2 trip computers, trip A, trip B, and you have real time fuel efficiency, which is the most useless piece of information that any manufacturer can provide you. उसका कुछ भी मतलब नहीं है. उसे देखते हुए आप पागल हो जाओगे. अगर आप क्लच प्रेस करते हो, क्लच एंगेज करते हो, माइलेज 99 का दिखा देगा, जो कभी हो ही नहीं सकता. I don't know why Hero MotoCorp could not give us an average fuel economy number. They do this with almost all of their motorcycles, and this RTMI is just such a pointless feature. I wish that the product team just starts to dismiss this real-time mileage information and not give us this info at all, if at all they don't want to give us average fuel economy. But otherwise, this Maverick 440, quite a nice bike. Look at the dust that truck is kicking up. Visibility is so poor that I really have to overtake that truck, otherwise I am going to catch some cold because I am allergic to dust. That guy just doesn't understand. He keeps swerving, and yeah, so that is it guys. अगर आपके और कोई सवाल है इस Maverick 440 के बारे में, ask me in the comments below and I will try my best to help you out.
अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो तो आप इस बाइक को कौन से दूसरे मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर कर रहे हो, विच अदर ऑप्शंस आर यू कंसिडरिंग, डू ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स टू. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Always ride safe, guys. The streets are for fun, they are for you to enjoy your ride, but they are also filled with a few idiots, so be careful. Wear proper riding gear, wear a good helmet, and I will see you soon in another video. Goodbye.